Good evening, everyone. Yeah, guys. Is my voice is clear? Yes, sir. Let me share my screen. Is my screen is visible to you? Now, basically, this problem we have already discussed. So, in our last session, we have discussed the concept of while, how while loop is working. So, that we have discussed. Now, in today's session, basically, first I will discuss few problems which are related to for as well as while. So, factorial problem we have already solved with the help of for loop. Now, we will solve this same problem with the help of while, so that you will understand what is the difference between for loop and while loop, and how you can convert a for loop code to while. How we can convert a for loop code to while. So that is a major objective we are going to follow. After that, we will discuss transfer statement. Transfer statement means the statements. Transfer statement means the statements who is going to change the flow of your program. Those are known as transfer state. So first problem is factorial of a given number. So basically, factorial means if you want 5 factorial. 5 factorial means you will start from 1 and go up till 5. So the value for this is 1 2 ja 2, 3 2 ja 6, 4 ja 24, 5 ja 1. Same as it is, if someone is asking 9 fact, what is the value of factorial? 1 into 2 into 3, 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9. So this is your 9 factorial. After multiplying this, whatever result is coming, that is your 9 factorial. So how we can write a code for this? How we can write a code for this? So with the help of for loop, we have already solved this problem. With the help of for loop, we have already solved this problem. How we will solve that problem? So what we have done, we have first taken some number as an input, int input, enter a number. So simply I have taken one number as an input. So this will take number as an input. After taking number as an input, your next objective is if I am taking 5 as an input. So our objective is generate numbers from 1 to 5. Same as it is if I want to get 9 factorial. So you will start from 1 and up till 9, we want to generate numbers. So our next objective is whatever number is come. For example, if 5 is coming, then I need to generate numbers from 1 to num 1, num 2, 1 to num 1. So how we will generate it? We will use range function. For I in range, starting from 1, go up till num plus 1. Why num plus 1? Because if I am taking only num, if I am taking only num, then num will go till num minus 1 only. So अगर मैंने 5 लिया है, अगर मेरी num की वैल्यू 5 है और मैं सिर्फ num 1 लिखता हूं तो सिर्फ 4 4 तक जाएगा ये. 5 is exclusive. So that's why I need to take num 1 plus 1. Now after this, if our numbers are there like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose that these are the numbers. If you want to multiply these numbers, so how we will multiply? First we will take these two numbers. First we will take these two numbers. We will multiply it and we will store in some separate variable named as f. F is my variable which will store the sum of previous two numbers. Whatever result we will get, we will take that result and the next element. So how we will do this thing? So what I am going to do, I am going to create one variable named as fact. And in this fact, I will store my factorial result. Whatever factorial result is there, that I will store in this variable, which is fact. After this, once your numbers are generated, once your numbers are generated, what you need to do after this? Anybody who can tell me? In last session, we have already discussed this thing with the help of for loop. किसी को याद है? Anybody? What we will do is
fact is equal to fact into I. So whatever older factorial value is there and whatever latest I value is coming, we are just multiplying. After that, print your fact. So this code we have already done with the help of for. With the help of for loop, we have already completed this flow. Now, how we can convert this for loop into while? That is the important thing. So this conversion you need to understand how we can convert for loop into while. So for that, this code is running. Let's complete this code. Then I will. Yeah. Suppose that I am giving 5. So 5 factorial is 120. So let's 1. Same as it is if I am giving 9 factorial. So 9 factorial is something like this way. This is your. So in this way, we can write a code for factorial. Now suppose that same problem I want with while. While loop. How we will do it? So remember this, whenever you want to convert your for loop to while loop, you need to make condition. What is your condition? While your starting value. In this range function, what is my starting value? 1. I will create one variable from where I am starting. I am starting from 1. And I will go till num plus, I will go till num plus 1. And here num is equal to this input that I am taking. After this, increment, decrement. Here, how much increment, decrement is happening? What is my step value in this scenario, guys? Anybody? What is step value in this scenario? Anybody? What is my step value in this scenario? The step value in this scenario is 1. So you need to update your I value to I plus 1. Like this. I is equal to I plus 1. We are updating our initial I value to plus 1. So for the first time, I value will be 1. Second time, I value will be 2, then 3, then 4. Let me print it. Print I. See. See. 5. See, our numbers are generated. 1, 2, 3, 4, 5. After generating the numbers, you need to multiply like this. So how we'll multiply? We will create one variable named as fact. Initially, fact value is 1. And whenever this loop is running, I am going to update. Fact is equal to fact into that's. So logic is same. This is your logic. Same logic I have used. Fact is equal to fact into I. So this logic and this logic both is same. Only changes here I have used for loop, here I have used while. So how you are converting it? Whatever starting value is there, that starting value you will take in some variable which is I up till which you are going to run your for loop, that is num plus 1. So that we have taken. After this, what is my step value? Step value is 1. So that step value I am incrementing here. Step value is nothing but your I value which we are incrementing. So if I am going to run this, see, 5 factorial is we are not getting because we have not printed the fact value because the result is just stored in your fact value. See, see, one that is the result. 5 factorial is 1. Now, if any question is there in this, please let me know. If any question you guys want to ask, please let me know this. Okay, fine. Let's take another problem. Python program to print sum of n natural number using while. That means we have already solved this problem with the help of for loop. Now we are going to convert that for loop in while. Okay, so that how we can. So what is the meaning of this? Some number value is there. Num is equal to some input I am taking. Enter a number. Some number I am taking here.
After this, after this, if my num value is 10, then the meaning of this statement is you will start generating numbers from 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, and then. Now here, instead of multiplication, we need to calculate the sum. So plus. Here also it is plus. Here also it is plus. Then again, plus. Again plus. Again plus. Like this. So summation we need to do. Instead of multiplication, we need to perform summation. So first objective is generate numbers from 1 to 10. So what is my starting value? The starting value will be 1. Where I am going to stop? I am going to stop when your condition, when your I value is less than whatever number you are given. That is numbers. Okay. Whatever value of number I have given plus 1 is your, okay. After this, next step, you need to update your value to I is equal to I plus 1. That means we are updating our value. So print I. See, if I am giving 10, it will generate numbers from 1 to 10. That is our requirement. After generating the numbers, you need to calculate the sum. Sum means take these two numbers, 2 plus 1, 3 is my result. This 3 I am going to store in some separate variable named as sum. Sum is my variable. In that I am going to store the sum of these two. And after that, I will take next element and this sum value, I will add this. 3 plus 3. So this result is what? 6. So again, I will update this value in some variable named as sum. Named as. Again, I will take next value and then sum value and I will update that. So how we will do it? Initially, my sum value will always be 0. And whenever this loop is running, I am going to update my sum. So sum is equal to sum plus. That's it. See. It is not printing sum because we Print have not sum. printed the sum value. Okay. See. 10. So these are my numbers. What is my sum? 55 is my sum. That's so here I am just discussing how you can convert a for loop into while. So previously we have discussed same question with for loop. Now same problem with the help of while loop. Only the thing is here we are going to start. Starting is nothing but your I variable, and where you are going to stop, that is my condition that I am taking. So this is your condition. Okay. After this, your sum is equal to sum plus I. That you are going to perform addition. So for that addition, we are taking sum is equal to sum plus I for addition. Okay. That is the thing on this. And then we are printing our sum value. Now, if any question, anything you guys want to ask, please let me. Then I will move to transfer statement. Some basic idea of while loop is covered. Now transfer statements are there that will ask. One doubt. What to do when 1 to 3 is sum and after 3 to 10 is multiplication? In that we need to split our code. What is the meaning of that? What he is asking? Let me clear this down. See, he is asking, suppose that my problem is something like this. Not this. I am not able to copy. Okay, give me one thing. 1, 2, 3. Between 1, 2, 3, this one summation. Okay. And after this, from 3 to 10, I want multiplication. This is it. So how we will do it? So basically here two loops we need to use. First loop I will use that will give me summation. Second loop I will use that will give multiplication. Okay. So how we will do it? Simple. I value will start from 1 while while I is less than 3. I is less than 4, not 3. Update your I value. I is equal to I plus 1. And summation you need to do. Sum is equal to sum plus I. And print, sorry, here sum initial sum value is 0. So this will give you the sum. This will give you the sum. Print sum. So this will give you 3 elements.
3 element sum you will get, that is 6. Now, if you want multiplication from 3 to 10, what you will do? Again, you will run loop. I value is what? 3. You will go up till 11 because 10 is there. So I will go till 11. Instead of addition, we will use multiplication. Sum into I. That is your multiplication. And your sum value cannot be 0 because here we are going to perform multiplication. So if you are going to multiply anything with 0, your overall result will be 0. Okay. So here we are going to multiply that thing. And after that, calculate the sum value. That is nothing but your this. See, first time 6, next time this is your 3 to 10 multiplication. Naman. Okay. In this case, separately, we need to take code for summation and then multiplication separately. Any other question, guys? Okay. Okay. After this, next is what? Next is your transfer state. So basically, in transfer statement, first type of statement is known as break keyword. So this break keyword is very, very simple. What this break is doing, so basically let me write transfer statement first. So basically there are three types of transfer statement which are there. Only three type of transfer statement is there. First type is known as break. Second type is known as continue. And third type is known as pass. Only these three are the transfer statement which are there. Now what is break statement? So basically break statement is used to terminate. To terminate. Terminate means stop. Terminate means stop. Our so suppose that some condition you have given, when that condition is true, you want to stop your loop. In that case, you are going to use break. Break is basically used to stop the loop. Let me take one example. For I in range 1 comma 100, 1 comma 10. Now, if my I value is 5, if my I value is 5, I am going to write break. Now, what this break will do? Whenever a break is encountered in your program, your loop will be terminated at that. So, if I'm going to run this code, you will see your result is up till 4 only. Because after 4 क्या होगा? Break encounter हो जाएगा. और जब ब्रेक इनकाउंटर्ड हो जाएगा तुम्हारा लूप जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. उसके बाद की कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो. तो ब्रेक क्या करता है? तुम्हारे लूप को स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है. Break is just used to terminate your loop. So whatever loop you have used, if you want to stop your loop, if a certain condition meets, this is the condition that you have taken. If a certain condition meets, you want to stop your loop. So for that, we are having break keyword. Break is used for stopping your loop. That is the job of break state. Okay. If I can take one more example, let me take one more example. Here I am writing something like 15. Anybody who can tell me what is my result that I will get? How many iterations will it do? How many iterations will it do? Will it do one iteration? Will it do two iteration, 10 iteration, 15 iterations? How many iterations will it? Anybody? How many iterations will it? See, when break is encountered, when break is encountered, at that moment only your loop will be turned. Now you are going to start numbers range of 1 comma 10. So this will generate number like 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9. So these numbers will be generated. Okay, these numbers will be generated with the help of with the help of range function. After this, at any point of time, your I value will be 15. क्या कहीं पे भी I की वैल्यू 15 हो सकती है? कोई बता सकता है? क्या कहीं पे भी I की वैल्यू 15 हो सकती है यहाँ?
नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नंबर्स जनरेट हुए हैं वो क्या नंबर्स जनरेट हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इतने नंबर जनरेट हुए हैं, इसमें 15 जनरेट नहीं हुआ है। तो आई की वैल्यू कभी भी 15 नहीं हुई। और जब आई की वैल्यू कभी भी 15 नहीं हुई है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो कितनी बार हमारा लूप चलेगा? 1 से लेके 9 तक लूप चलेगा। सी, 1 से लेके now if I am taking 7, how many iterations will it do? Think, how many iterations will this code do? Anybody? I am waiting for your response, guys. At least one response. It is correct or not, that is fine, but at least give a try. How many iterations will this code will? 6, sir. 5 iteration. Okay, 6 iteration. Anybody else? Okay, fine. See, I value is new. For the first case, I value will be 1. 1 is equal to 7? No. So print I. 1 will be printed. Then I value will be 2. Again, this condition is false. Again, I will be printed. I value is 3. Again, this condition is false. Again, I value will be printed. Again, I value will be 4. Again, this condition is false. Again, I value will be printed. Then again, I value will be 5. Again, print I. 5 will be printed. Then I value will be 6. 6 will be printed. Now, when 7 is come, so 7 is equal to 7. Yes, 7 is equal to 7. तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमें मिल गया ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या करेगा? तुम्हारे लूप को स्टॉप कर दे, बस उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं है। यहीं पे तुम्हारा लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और जब लूप स्टॉप होगा तो कितने आइट्रेशन होंगे? 1 से लेके 6 तक आइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा लूप जो है वो रुक जाएगा। देखो, ठीक है, ब्रेक का काम ही यही होता है कि तुम्हारे लूप को रोक देता है। ब्रेक का काम होता है कि लूप को रोक देना। ठीक है, ये हमारा। अब बताओ, ब्रेक में डाउट हो? सिंपल सा काम है, ये ब्रेक जो है ये तुम्हारे लूप को रोक दे, बस इतना ही काम है। हाँ भाई, एनी क्वेश्चन? ओके, आफ्टर दिस वी आर हैविंग कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट। आफ्टर दिस वी आर हैविंग continue statement. So basically, this statement is used to skip current iteration. To skip current iteration. देखो, ये बहुत सिंपल। कंटिन्यू क्या करेगा? skip का मतलब है छोड़ दे। तो जब भी कंटिन्यू इनकाउंटर्ड हो, तुम्हारा जो करंट आइट्रेशन उसको वो छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। क्या मतलब है इसका? मैं इसी का एग्जांपल, दिस इज माय कोड और यहां पे मैं लिख रहा हूं कंटिन्यू। ठीक है, मैंने लिखा कंटिन्यू। अब क्या होगा? फर्स्ट केस में आई की वैल्यू 1 है, तो 1 is equal to 5, कंडीशन फॉल्स, आई विल बी प्रिंटेड विच इज, अगेन आई वैल्यू विल बी 2, 2 is equal to 5, condition false, again I will be printed. Then I value will be 3, 3 equal to 5, condition is false, again print I. Then again I value will be 4, 4 equal to 5, condition false, again print I will be printed. Then when I value is coming as 5, जब I की वैल्यू 5 होगी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब कंडीशन ट्रू हुई हमें मिल गया कॉन्टिन्यू। अब ये कॉन्टिन्यू क्या करेगा? इसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू हुई और हमारा कॉन्टिन्यू इनकाउंटर्ड हुआ, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब इसके बाद जो करंट आइट्रेशन है, करंट आइट्रेशन क्या है? आई की वैल्यू है 5, दैट इज माई करंट आइट्रेशन। your current iteration is when your I value is 5. Okay, this is our current iteration. Now, when our I value is 5, then my condition is true and continues encountered.
तो इसके बाद कुछ भी चीज लिखी होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी आई इज इक्वल टू 5 के लिए। डायरेक्टली क्या करेगा, ये आई इज इक्वल, जब इसको कंटिन्यू मिला, यहाँ पे इसको कंटिन्यू मिला, ये डायरेक्टली नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन क्या है, तो क्या होगा, जो 5 वाला है वो स्किप हो जाएगा, ये जो आइटरेशन होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा skip। तो इसलिए हम लोग कंटिन्यू का यूज करते। तो कंटिन्यू क्या करता है, तुम्हारे आइटरेशन को स्किप कर देता है। ये कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यू एनकाउंटर हुआ, डायरेक्टली ये नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये काम होता है हमारा कंटिन्यू का। लेट मी रन दिस एंड शो। सी, 5 कहीं पे नहीं दिखेगा इसमें, कहीं पे भी 5 दिख रहा है, बिकॉज व्हेन 5 आई वैल्यू इज 5, कंटिन्यू इज इनकाउंटर, जब कंटिन्यू इनकाउंटर्ड होगा डायरेक्टली ये जो है नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाएगा। तो ये स्किप करता है आइटरेशन। व्हाट ब्रेक इज डूइंग, ब्रेक इज टर्मिनेटिंग, ब्रेक इज स्टॉपिंग योर लूप, बट कंटिन्यू विल skipping your iteration, skipping, okay, it is skipping your iteration, that is it. Let me take one more example. Now, this is my shopping cart. You guys know about cart. So in cart, there are certain amounts which are there. This is our cart. In this cart, certain amounts are there. What is my requirement? My requirement is if cart value is greater than 3000, just skip. अगर कार्ट की वैल्यू 3000 से ऊपर है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर कार्ट की वैल्यू 3000 से इक्वल है तो उस वैल्यू को छोड़, बाकी जो वैल्यूज है उनको ले लो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर आई इन, ठीक है, कंडीशन इफ कार्ट वैल्यू, दैट मींस आई, इफ आई इज ग्रेटर देन 3000, अगर ये ट्रू हो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, जब भी आई की वैल्यू 3000 से बड़ी हो, जब भी आई की वैल्यू 3000 से बड़ी होगी तो हम उस आइट्रेशन को हटाए देंगे। ठीक है, वो आइट्रेशन ही कंसीडर नहीं कर रहे, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट करें। देखो आगे, values which are lesser than 3000, that value I am, sorry, the values which are lesser than 3000, that values I am। okay? तो कंटिन्यू का यही काम होता है कि जो भी हमारा करंट आइट्रेशन है दैट विल स्किप। सर इफ वी राइट आई, हाँ, बोथ केस, इन दैट केस बोथ विल बी स्किप। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉर आई इन रेंज 1,10, 1,10, इफ आई इज इक्वल टू 5 और आई इज इक्वल टू 7, ठीक है, मैंने लिखा कंटिन्यू। ठीक है, अब क्या करेगा, जो फिफ्थ और सेवेंथ आइट्रेशन होगा वो स्किप कर जाएगा, जो फिफ्थ और सेवेंथ आइट्रेशन होगा वो स्किप कर जाएगा। देखना, देखो 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं। ठीक है, अगर ब्रेक यूज कर लेते तो क्या होता, 5 के बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 5 पे हमारा लूप ब्रेक हो जाता है। ब्रेक का मतलब होता है कि स्टूप लूप खत्म हो जाना, एंडिंग ऑफ द लूप। तो इफ आई एम राइटिंग ब्रेक हियर, देखो क्या होगा, 1 2 3, जब 5 आया कंडीशन ट्रू हुई, जब कंडीशन ट्रू हुई ब्रेक आ गया, और ब्रेक क्या करेगा, तुम्हारे लूप को स्टॉप, दैट इज। हाँ गए शास्त्री को। नमन क्लियर हुआ यहाँ पे, इज इट क्लियर नमन? ठीक है, अगर और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो गाइस। इफ एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर प्लीज लेट। आफ्टर दिस one more statement is there that is known as pass, okay, one more statement is there that is known as pass key. So basically, this pass is nothing, just a placeholder, just a placeholder. इसका मतलब क्या है, अगर हमको एम्प्टी ब्लॉक बनाना है, अगर हमको एम्प्टी ब्लॉक बनाना है तो हम लोग पास का यूज, इट इज यूज
क्या मतलब है इसका, समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 10। इसके बाद मेरे को नहीं पता कि इस फॉर लूप के अंदर क्या चीज लिखनी, मेरे को नहीं पता है इस फॉर लूप के अंदर क्या चीज लिखनी, मेरे को ये एक एम्प्टी ब्लॉक बनाना है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो पाइथन जो है वो एरर दे देगा। पाइथन ने दे दिया एरर। अब एरर भी नहीं चाहिए हमको, ये इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखना है, बट स्टिल हमको ये फॉर आई इन रेंज चाहिए, बट मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखना चाहता, तो उसको कहते हैं एम्प्टी ब्लॉक। तो उस एम्प्टी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को पास लिखना पड़ता है। तो ये पास एक कीवर्ड होता है जो क्या करता है, जो एम्प्टी ब्लॉक को रेफर करता है। एम्प्टी ब्लॉक का मतलब ये ब्लॉक हमारा एम्प्टी है। अगर मैं इसको रन करूंगा कोई एरर भी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, देखो कुछ नहीं। ठीक है, सेम एज इट इज, अगर मैं कुछ कंडीशन लेता हूं, इफ आई इज ग्रेटर देन 5, अगर मैं इसमें कुछ नहीं लिखना चाहता हूं और मैं इसको रन कर देता हूं, देखो क्या होगा, एरर आ जाएगी। आ गई अभी? ठीक है, तो मेरे को इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पास दूंगा। पास का मतलब होता है कि ये एक एम्प्टी ब्लॉक है, ये एक एम्प्टी ब्लॉक है, देखो हो गया रन, एरर नहीं आएगी। तो बेसिकली पास इसलिए यूज होता है अगर हमको एम्प्टी ब्लॉक बनाना है, एम्प्टी ब्लॉक बनाना है तब हम लोग पास का यूज करते हैं। ठीक है, पास बेसिकली यूज होता है एम्प्टी ब्लॉक बनाने के, एम्प्टी ब्लॉक बनाने के लिए पास यूज। तो अगर कोई भी ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक तुमको बनाना है, ठीक है, उसे एम्प्टी रखना है। एम्प्टी का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है तुम, तो उसके लिए तुमको पास लिखना मैंडेटरी है। अगर पास नहीं लिखोगे, वी विल गेट एन एरर इन दैट। इफ यू आर नॉट राइटिंग पास, इट विल गिव यू एन एरर एट दैट। ओके, वहां पे एरर दे देगा। दैट्स वाई पास इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, वी नीड टू राइट पास। इफ वी आर नॉट राइटिंग पास, इट विल गिव एन एरर। Okay, so for representing an empty block, we need to write pass. For representing an empty block, we will write pass. That is it. यही पास का काम होता। ठीक है, कोई डाउट किसी को? दैट इज अवर पास। पास करता कुछ नहीं है। अगर कहीं पे कोड पे मैंने लिख दिया, कोई कोड पे मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 10, फिर मैं लिखता हूँ तो इस केस में देखो मैंने पास लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी मैंने लिख दिया पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि पास कुछ करेगा, पास कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हारे आइट्रेशन पूरे 10 ही होंगे। पास कुछ करता नहीं है तुम्हारे कोड में, अगर तुम पास लिख भी देते हो ये कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कुछ करता नहीं, देखो 0 से 9 तक नंबर जनरेट किए इसने, जो कि नंबर जनरेट होंगे क्योंकि रेंज 10 में नहीं। ठीक है, तो ये कुछ कर नहीं रहा है, पास हमारा कुछ करता नहीं है, ये जस्ट अ प्लेस होल्डर होता है। एम्प्टी ब्लॉक को अगर तुमको रखना है तो तुम पास लगा दो, कोई भी एम्प्टी ब्लॉक बनाना है तो पास लगा। For writing pass, what is the minimum space? At least two tab space you need to give. टू tab space. Okay, indentation यहाँ पे सेम फॉलो होती है। ठीक है, फिट एंटर करूंगा, जितनी स्पेस यहाँ पे दिख रही है ना उतनी स्पेस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, सेम इंडेंटेशन, जो इंडेंटेशन हम लोग देते हैं ना उतनी ही इंडेंटेशन देनी चाहिए। कि अगर हम कोई कोड लिखते हैं उसके अंदर तब भी कुछ इंडेंटेशन हम लोग देते हैं ना, सेम इंडेंटेशन वी नीड टू गिव। ठीक है, बिकॉज पास इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कोड। नेक्स्ट आउट। हाँ गाइस, एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? हाँ, ठीक है, तो ये हमारा होता है पास। तो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। पहले पढ़ा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट दी लूप। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप करना लूप। टर्मिनेट दी, इसका मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप दी लूप, लूप को स्टॉप कर। सेकंड जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यू। ये क्या करता है, स्किप कर देता है, छोड़ देता है, स्किप करेंट आइट्रेशन। जब भी कंटिन्यू इनकाउंटर्ड होगा, जो भी आइट्रेशन होगा एट दैट मोमेंट, वो आइट्रेशन जो है स्किप हो जाएगा, सिर्फ वो आइट्रेशन स्किप हो। ठीक है,
वो आइट्रेशन सिर्फ स्किप होगा, दैट इज स्किप करंट आइट्रेशन। ठीक है, थर्ड जो होता है उसको बोला जाता है पास। ये पास क्या करता है? पास इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, ओके, फॉर रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी ब्लॉक। अगर आपको एम्प्टी ब्लॉक बनाना है, देन यू आर हैविंग पास फॉर रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी। दैट्स सो ये तीन चीजें हमने पढ़ी। और फॉर लूप को व्हाइल लूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। सो लेट मी राइट सम कोड एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर। How many times high will be printed? How many times high will be printed in this code? Anybody take a guess and tell me. How many times high will be printed in this code? This is our complete code. So in this code, how many times high will be printed? तो बता सकता है? How many times high will be printed in this? Is it one time, two times, three times, five times, infinite times? How many times? No idea. Naman, give a try. 5 times. हाँ, answer is correct. The answer is 5 times. Why 5 times? See, how many numbers this range of 5 will generate? It will generate 0, 1, 2, 3, 4. These are the numbers which will be generated. Now I have written I is equal to 3. जब I की वैल्यू 3 होगी, तब यहाँ पे पास आ गया है। पास कुछ करता नहीं है तुम्हारे कोड में, याद रखना। पास कुछ करेगा नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे जो पास लिखा है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, ये कुछ कर नहीं रहा है। ये ना तुम्हारे आइट्रेशन को स्टॉप कर रहा है, ना तुम्हारे आइट्रेशन को स्किप कर रहा है। तो हाई जो है, जितने नंबर ऑफ आइट्रेशन है उतने नंबर ऑफ आइट्रेशन बार हाई प्रिंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार हाई प्रिंट होगा इसमें। अब कोई बताओ कितनी बार हाई प्रिंट होगा? हाँ, कितनी बार हाई प्रिंट होगा ना? हाउ मेनी टाइम्स हाई विल बी प्रिंटेड? लेट मी राउंड क्वेश्चन। देखो 5 बार हाई आ गया यहाँ। कितनी बार प्रिंट होगा? ओनली नमन इज कंसंट्रेटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। इट इज 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स होगा? क्योंकि जब आई की वैल्यू 3 होगी, तो हमारा लूप जो है वो स्किप कर देगा ये आइट्रेशन को। जब आई की वैल्यू 3, जब आई की वैल्यू 3 होगी, वो आइट्रेशन जो है उसको स्किप कर देगा। तो अगर हमने 3 को स्किप कर दिया, तो कितने आइट्रेशन बचे? 3, 1, 4। तो 4 बार हाई प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब आखिरी एग्जांपल, इसमें कोई लोग बताओ क्या आएगा। मैं ब्रेक यूज कर रहा हूँ। हम्म, हाउ मेनी टाइम्स हाई विल बी? एवरीबडी गिव रिस्पॉन्स। हाउ मेनी टाइम्स हाई विल बी प्रिंटेड? Sir, 3 times. 3 times, correct. Anybody who is selling 4 times or 5 times, तो बोल सकता है कि 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ना हो। यहाँ पे 3 टाइम्स रिजल्ट कैसे दे? When I value is 0, 0 is equal to 3? No, condition is false. High first time high print हो गया। फिर I की वैल्यू क्या है? 1, 1 is equal to 3? No, it is false. So again high value printed, दूसरी बार high print हो गया। 2, 2 is equal to 3? Condition again false, print high, high print हो गया तीसरी बार। 3 बार high print हो चुका है। After this I value will be 3, 3 is equal to 3, condition is true. So if the condition is true, break is encountered.
जब ब्रेक इनकाउंटर्ड हो गया वहीं पे फॉर लूप खत्म हो जाए। ठीक है, लूप खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो लूप खत्म हो गया तो कितनी बार हाई प्रिंट हुआ? सिर्फ 3 बार। 3 बार हाई जो है वो प्रिंट। दैट इज द स्टोरी। ठीक। ये तो हमारा था ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक, कंटिन्यू और पास हमारा ये। ठीक है, इसको वाइल के साथ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, वाइल के साथ भी ये सेम काम करेगा। तो इसी कोड को मैं वाइल के साथ लेके दिखा देता हूँ। हाँ, अब कितनी बार रन होगा? अब कितनी बार रन होगा? हाई कितनी बार प्रिंट होगा? Anybody is there? How many times have we printed in this case now? तो बता सकता है? नमन, give it a try. How many times have we there? हाई जो प्रिंट होगा जब आई की वैल्यू 6, दैट मीन्स कितने नंबर्स यहाँ पे आएंगे? नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5। दीज आर द नंबर्स व्हिच विल बी देयर। आफ्टर दिस व्हेन आई वैल्यू विल बी 4, दैट मीन्स यहाँ पे आइट्रेशन स्टॉप हो जाएगा। जब आई की वैल्यू फ्री होगी तो उससे पहले कितने आइट्रेशन हो रहे हैं? 3 आइट्रेशन। तो 3 बार हाई जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब जिसको कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर, यू गाइस कैन आस्क। किसी को भी डाउट है तो पूछ दो। एनी डाउट, एनीथिंग? Okay, I think shall we end up? No doubt is there. No, sir, no doubt. Sir, excuse Yes, me. sir. बताओ। Sir, how to reduce mistake while practicing when we miss the no, we can make minute mistake while. Please repeat your question, मैं समझ नहीं पाया क्या बात है सर। सर, क्वेश्चन ये माइन्यूट मिस्टेक कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि सो किस कोडिंग टाइप करते हैं तो से? जैसे कि सेमी कॉलन मिस कर हाँ, जाते ये हैं ये सब, देखो ये या फिर इस। सिंटेक्स से आएगी। ये जो है ना सेमी कॉलन वाली है ना। तो देखो जब भी कोई ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे कोलन देते हैं। तो ये कोलन जो रहता है ये इफ के साथ रहता है, एलिफ के साथ रहता है, एल्स के साथ रहता है। ये सब ब्लॉक है। सेम एज इट इज वाइल के साथ रहता है, फॉर के साथ रहता है, और डी एफ के साथ। सो सिर्फ इतने चीजों के साथ जो है तुम्हारा जो है कोलन रहेगा। ठीक है, अगर तुम इनमें से कोई भी एक चीज दोगे तो वो कोलन रहेगा। ये सब ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी तुमको ब्लॉक बनाना है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। और ये प्रैक्टिस से आता है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहोगे ना, देखो शुरुआत में ये आएगी दिक्कत, बाद में धीरे धीरे कवर। ठीक है, ये ब्लॉक्स होते हैं, इनमें हमको कूलर लगाना जरूरी होता है। और ये मिस्टेक्स जो होती है ना, अभी बिगनर है इस वजह से मिस्टेक हो रही है। धीरे धीरे ये चीज अपने आप ही सही हो जाएंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं बता दूं ये चीज हो जाए तो ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। या ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Okay, sir. Have a good day.